Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. That's me, Dr. Sidharth Arora, and friends. बड़े बड़े इंतजार के बाद ये दिन आ ही गया, right? So we've been waiting this for the longest time. Okay, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी UPSC का नोटिफिकेशन डिले हो रहा था, कभी कभी अलग अलग तरह के रूमर्स फैल रहे थे. We knew what was happening in the Supreme Court, and we were expecting that any time this notification will come. But then, as you know, कि जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक वो मिल नहीं जाता, तब तक वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्लाइटली apprehensive of the fact. But today, on 4th March 2021, we finally have the UPSC notification for the exam of 2021 Civil Services Examination. So एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेडेक खत्म, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंतजार खत्म. देखो ऐसा कुछ होता नहीं है. We were always sure that the notification will come out, and we were always sure that there will be hardly any changes with regards to the examination schedule and so on and so forth. एक पेंडिंग लिटिगेशन की वजह से ये पोस्टपोन हो रहा था, या फिर whatever it was being held up for some reason or sorts. लेकिन फिर भी इंसानी प्रवृत्ति है, the nature is like this, कि we want to find that order, we want to find that so called definiteness कि हाँ यार ये हो गया. So now that this notification is out, the time has really come that you plan it out कि मैंने ये एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे एड्रेस करना हो, the various challenges of this exam. And today in this video I will try and help you out how to actually plan yourself in the light of this UPSC notification which has happened. So 115 दिन रह गए, 115 days from the beginning as of now till the date of the exam, that is of the biggest exam in the world, the toughest exam in the world. So let us see this, okay? और हम धीरे धीरे step by step इस पूरी notification को पढ़ेंगे. We will try and understand whatever are the salient features. We don't need to go word by word, because word by word आपको जब reading करना होगा तो you can read it when at your own sweet disposal whenever that is point. मैं तुम्हारे साथ सारे salient features discuss करूंगा. Let's grow and read this notification now. So Union Public Service Commission examination notice number etc etc. The last date for receipt of application is 24th March 2021. The date notification has come out today, that is on 4th March 2021. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, वो डेट जो तुम्हें याद रखनी है विल बी 24th March of 2021. तो पहले तो ये कर लो, तो जो काम की चीज है वो कर लेते रादर देन गोइंग इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, पहले ये बात देख लो, ये 24 मार्च ना मिस हो जाए. अब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे. इंपॉर्टेंट, ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑलवेज लुक एट दिस ऑन द वेबसाइट, but candidates to ensure the eligibility for the examination. So first of all, ये खुद ही बोल रहे यूपीएससी, रीड द नोटिफिकेशन, एब्सोल्युटली रीड दिस नोटिफिकेशन केयरफुली. एक लॉ में एक बात बोला जाता है दैट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इग्नोरेंस ऑफ द लॉ. इसलिए एक एक चीज नोटिफिकेशन को ध्यान से स्टार्ट करो. सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. ऑलराइट, इस वेबसाइट पर जाना है तुमने, that is upsconline.nic.in, और उस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट. मैं फिर बोलता हूं, आराम आराम से ध्यान से एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए जाना. ये तुम्हारे करियर का मामला है, तुम्हारे लाइफ का मामला है. सो the point here is the candidate should have details of one photo ID card, Aadhaar card, voter card, PAN card, passport, driving license, any other photo ID card issued by the central government. और यही जो कम्युनिकेशन है, ये कोशिश करो, इतने ध्यान से देखो कि देयर शुड बी नो कॉन्ट्ररी फैक्ट्स व्हिच यू आर गिविंग एज कंपेयर टू व्हाट इज प्रेजेंट इन दीस आईडी कार्ड्स. सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन है. सेकेंड इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. थर्ड, रिमेंबर the website. Fourth, remember that the date is 24th March 2021. तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट. अब है डेट. तो यहाँ पे डेट पहले से लिख दिया, 24th March 2021 till 6 PM. तो भाई प्लीज इसको 24 मार्च को ही कुछ हमारे कुछ मेजर ही ग्रह परिवर्तन हो रहा है, उस दिन करेंगे, ऐसी समझदारी मत करना. बहुत समय बाकी है. स्टार्ट मेकिंग श्योर दैट आपको जितना भी डेटा इकट्ठा करना है, जो भी डाउट्स है सब कुछ पूछ लो, लेकिन डू इट इन बिफोर टाइम. कुछ और लास्ट मोमेंट पे भागदौड़ हो जाने से अच्छा डू इट राइट नाउ, समवेयर इन द मिडल ही कर लो. दैट्स द एंटायर पार्ट. अब इंपॉर्टेंट बात यह है, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड 3 weeks बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. E-admit card will be made available on the UPSC website for downloading by candidates.
नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट। तो पहले जो मैं बात बोलता जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर सुनने की अदाएं खत्म हो गई है, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया। एवरीवन वांट्स ओनली एक्सप्रेस, सिर्फ सोशल एक्सप्रेशन ही होता है, कोई सुनने को नहीं तैयार होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ लर्निंग इज थिंक एंड हेयर थिंग्स। जो बोला जा रहा है उसको पकड़ के रखो। नथिंग इज गोइंग टू कम बाय पोस्ट, इट इज ओनली गोइंग टू बी डाउनलोडेबल ऑन द वेबसाइट। वो ई एडमिट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है। सो द पॉइंट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो ये जमाना भी आ गया, मोबाइल फोन्स आर बैन, use of any mobile phone even in switched off mode, pager, any other electronic equipment, programmable device, storage media like pen drive, etc, 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 is all banned. सर अब मालूम है क्या होता है, लोगों को बड़ा मजा आता है ये सब करने में, कि सर कुछ और लेकर जा सकते हैं क्या, चलो सर छोटा सा मोबाइल है सर, स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा लेकर जा सकते हैं क्या। अरे बाबा लेकर ही नहीं जाने का, ओके सिंपल, ऑफलाइन जाओ, एब्सोल्युटली ऑफलाइन, जैसे 1990 में लोग जाते थे ना वैसे जाओ। ओके नथिंग इलेक्ट्रॉनिक, डोंट टेक चांसेस विद दिस। मैं तुम्हें एज ए लॉयर बता देता हूं, don't mess up with these rules at all, don't take chances at all with this. So not to bring any of the banned items including to the venue of the examination as arrangement for safekeeping cannot be ensured। तो बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंटली, इससे ज्यादा एक पूरा पैराग्राफ बनाकर यूपीएससी अगर भेज रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के भेज रहा है, तो द पॉइंट है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाटसोएवर एट ऑल, डोंट टेक चांसेस एट ऑल। अब इंपॉर्टेंट बात, अब डी डे आ गया। डी डे क्या है, अब ध्यान से सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है बाबा, इसको थोड़े भारी आवाज में बोलो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन for the recruitment to the services and posts mentioned below will be held by the UPSC on, wow, अब चेक कर लो बेटा तुम्हारी ग्रह चाल, अगर तुम्हें कोई मालूम है कि कौन सी ग्रह चाल चलनी थी, तो ये दिन है, दिस इज द डी डे, दिस इज द डे दैट वी हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर, दिस इज द डे दैट वी हैव बीन waiting for so long, 27th March 2021, in accordance with the rules published by the Department of Personnel and Training in the Gazette of India as on today, that is on 4th March 2021. So of the various things that you will be aware of, wow sir, हम क्या बन सकते हैं, IAS, IFS, Indian Foreign Service, Indian Audit Account Services, Indian Civil Account Services, ABCD and so on and so forth। तो जो सपने को तुम लोगों ने इतना टाइम से संजोया है, उसका एक्चुअली द प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी ऑन 27th June of 2021। तो 27th June 2021 is that date which is the D day। Interestingly, second part, सर कितनी सीट्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर ऑफ वेकेंसीज टू बी फिल्ड टू द एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सपेक्टेड टू बी, इंपॉर्टेंट वर्ड, approximately 712, which includes 22 vacancies reserved for the persons with benchmark disability category, which is including of blindness, which is including of deaf and hard of hearing, which is including of locomotor disability, including cerebral palsy, cured cerebral leprosy, cured dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy, and vacancies for multiple disabilities from amongst persons under clauses A to C, including deaf blindness। Important बात यह है कि sir vacancies in this case is 712, कम ज्यादा हो रही है सर, होता ही है। सो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो वी हैव सीन दिस ग्राफ गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऑलराइट, बट यस देयर हैज बीन अ जनरल डिक्लाइन, नो डाउट अबाउट इट। सो अगर मैं ऐसे देखता चला जाऊं तो 880, 1091, 1200, 1300, ओह नाउ इट हैज सर्टेनली कम डाउन, सो 712। Having said so, this should not be a matter of discouragement. This should be a matter of actually picking up your own preparation and rising up to the challenge कि सर हमारे लिए तो एक ही सीट काफी है, 712 हुआ तो क्या हुआ। सो एक ही सीट काफी है, मेरे 2 सीट्स पे थोड़ा बैठना है। सो इफ यू कैन डू इट विद 1300, you can do it with 700 also। So point here is don't let this discourage you। Yes, I am showing you the graph, मैं तो तुम्हारे सामने बेसिक ग्राफ ही दिखा रहा हूँ, लेकिन there is a certain decrease and that decrease was kind of unexpected lines। ऐसे बातें जरूर रुकने लग गई थी, but don't make it a reason, don't make it an excuse। Let's continue on the focus। Centers पता होना चाहिए। Centers for civil service examination, preliminary examination will be held in the following centers। The following centers पूरे ही पूरे नाम है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है
जो छोड़ दिया जाता है फॉर यूपीएससी, प्रैक्टिकली एवरीवेयर यू हैव टू डू दिस. So you can take a look at where you're geographically staying and you can decide on this matter. ऐसे centers for civil services mains examination भी है, which of course are lesser, but यहाँ पर बड़ा important part है. They are liable to be changed at the discretion of the commission. Applicants should note that there will be a ceiling on the number of candidates allotted to each of the centers except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of centers will be on, बहुत important, first apply, first allot basis. And once the capacity of a particular center is attained, the same will be frozen. Applicants who cannot get a center of their choice due to ceiling will be required to choose a center from the remaining ones. Applicants have thus advised that they may apply early as they may get center of their choice. यहाँ पे 2-3 जगह पर मे वर्ड आ गया है. एक कि भैया तुम ट्राई कर लो, दूसरा हो सकता है वहां की सीट्स फ्रीज हो चुकी हो, तीसरा इवन एट द एंड ऑफ इट it is on first apply first allot basis, and the fourth that even if all these things suits you, it will be at the discretion of the commission whether or not you will be allotted. लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, in this game जो सबसे पहला है जब आएगा तो you should be choosing it early. तो ये तब की बात है, of course that is when for mains examination, but you must choose this part. तो plan of the examination पहले होता चाहिए. आप नेचर समझ लो, ये स्पेशली उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो पहली बार अटेम्प्ट करें. जो दूसरी बार अटेम्प्ट करे उनको पहली बार का पता चल चुका होता है. सो पहली बार पता चलने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है. प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन में 2 सक्सेसिव स्टेजेस है, एक के बाद एक. जो पहला एग्जामिनेशन है दैट इज सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, और ये एग्जामिनेशन से तुमको कोई रैंक नहीं मिलता है. सर मेरे फुल मार्क्स आएंगे, कोई अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बट द आइडिया हियर इज ऑल यू हैव टू रीच इज द कट ऑफ. यू जस्ट हैव टू क्रॉस दैट कट ऑफ. ये एग्जामिनेशन इज ओनली द एंट्री पॉइंट टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. रिटन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स. दिस इज फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन. दिस इज फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट. तो सिंपल सी बात है, दोनों एग्जाम के अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है, अलग अलग रूल्स है, अलग अलग रेगुलेशंस है, क्योंकि इनके अलग अलग पर्पस है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, मेंस एंड इंटरव्यू से तुम्हें रैंक मिलता है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्रॉस करते ही तुम मेंस के लिए एलिजिबल होते हो. मेंस में जब तुम कट ऑफ क्रॉस कर जाते हो या फिर तुम्हारा रैंक आ जाता है तो तुम्हें पर्टिकुलर सर्विस के लिए सिलेक्शन हो जाता है. सो नाउ द आज की जो खबर है, आज की जो ताजा खबर है, इस टाइम पर देखो कितने अच्छे अच्छे तरह से लिखा हुआ है. ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो बड़े अच्छे तरह से किसी लॉयर ने ड्राफ्ट किया होता है, बड़े अच्छे तरह से लीगल टीम होती है. एप्लीकेशंस आर नाउ इनवाइटेड फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली. और इससे ज्यादा शब्दों में क्या बोला जा रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आ रही है जिसके विषय में मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, वो वाला जो पार्ट है दैट इज ओनली इनवाइटिंग यू फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली. यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द फर्स्ट स्टेज. Candidates who are declared by the commission to have qualified for admission to the civil service main exam will have to apply online again and submit the online DAF1 form. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको एक और बार भरना पड़ेगा ऐसा ही फॉर्म एंड सबमिट ऑनलाइन DAF फॉर्म, जिसे बोला जाता है द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1. तो DAF1 तब भरोगे जब तुम रेडी होंगे with your scanned document, certificate in support of date of birth, category EWS हो, SC हो, ST हो, OBCs हो, the ex-serviceman educational नहीं. अब याद रखना, जिस तरह से अभी मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई देर मत करना, उसी तरह से there is a time limit at that time also. अगर तुमने DAF1 या फिर any of the related documents को भेजने में देर की तो भाई वहां पर भी इट विल नॉट बी अलाउड एंड विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटचर फॉर CSE 2021. तो वक्त का बड़ा ध्यान से करना. बहुत सारे लोग इसी चीजों में फंसे रह जाते हैं कि सर एक दिन रह गया, 2 दिन रह गया. प्लीज डोंट डू दिस, राइट. टेक हेल्प फ्रॉम हुएवर पॉसिबल. अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बट स्टार्ट अर्ली बिकॉज देयर इज अ पॉसिबल पार्ट. DAF2 भी होता है बट इट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट. तो मींस का जब हो गया, उसके बाद जब पर्सनालिटी टेस्ट का टाइम आएगा उससे पहले तुमको DAF2 भरना है. Candidates who wish to indicate IAS, IPS in their service preference are advised to indicate all the zones and cadre in the order in their online DAF2 as per the extent of allocation policy applicable. तो बहुत सारे लोगों को, खासकर the first
टाइप के एस्पिरेंट्स को नहीं मालूम होता कि कब ये आईएएस आईपीएस चॉइस होता है. सो एट दैट टाइम, ओके, एंड प्लीज इन केस तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, टेक हेल्प, राइट? So take help from your seniors, take help your friends, take help from your teachers. Don't make a mistake. Don't goof up on this part. If you make a blunder on this, it's all over. There is hardly any chances of correction of this form, whether you file it at the right now stage, that is the application stage, or at DAF 1 or DAF 2. तो बड़े ध्यान से DAF 1, DAF 2 के टाइम पर take guidance. You are bound to make mistakes on this part, especially if you are not aware of this part. Nationality के लिए, for Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India. बाकी services के लिए, you can be a citizen of India, subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came to India before 1st January 1962 for the permanent settling in India, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, etc., with the intention of permanently settling in India. तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा तरीका होता है. इन मोस्ट केसेस जो ऊपर से मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सब 90% लोगों पे एप्लीकेबल होता है. बाकी लोग प्लीज गो इन डेप्थ ऑफ इट. इफ एनी ऑफ दिस आल्सो अप्लाई टू यू, यू शुड नो कि वेयर डज दिस अप्लाई एंड वेयर डज दिस नॉट अप्लाई. सो प्लीज रिमेंबर, फॉर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर or an IPS officer, you have to be a citizen of India. Rest of them fall under the rules of the exceptions as given. Very good. Age limits बड़ा important है. अरे ये क्वेश्चन मुझे लोगों ने तंग कर देते हैं. कब की बात होती है, कब तुम्हारा अपना बर्थडे चेक कर लो. You should have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on इस date. प्लीज अपना मैथमेटिक्स मत कैलकुलेट करने लग जाओ कि सर पता नहीं कहाँ. 1st August of 2021 अगर आपका कट ऑफ डेट है, that is a candidate must have been born not earlier than 2nd August 1989. अपना बर्थडे चेक कर लो, and not later than 1st August 2000. अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा वो मैथमेटिक्स क्या तुमको करके देंगे. अपना कैलेंडर में ये मैथमेटिक्स कर कैलकुलेट कर, मैं 21 साल का हूँ, 21.5 साल का हूँ, 21.25 का हूँ. डोंट डू ऑल दिस. जस्ट टेक द डेट्स. If your birth is not earlier than 2nd August 1989 and not later than 1st August 2000, congratulations, welcome to the exam. So age यहाँ पे खत्म हो गया. Upper age limit भी relaxable भी है. So there is an age relaxation also. Up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to scheduled caste or scheduled tribe. तो मैक्सिमम 5. तो जहां पर भी रिलैक्सेशन रुक रहा है 21-32 वाला, 21 मिनिमम, 32 इज मैक्सिमम. 5 साल एक्स्ट्रा ऐड कर लो, विल बिकम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का. मैक्सिमम फॉर 3 years in the case of candidates belong to OBCs who are eligible to avail OBCs who are eligible to avail this kind of reservation. Maximum 3 years in case of defense services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, and 5 years in the case of ex-serviceman. And there are more such divisions. So जब तुम नोटिफिकेशन पढ़ोगे, अगर तुम्हारा कहीं और लग रहा है कि there is another way or there is some other category that you belong to, there are more subdivisions also. Please keep looking at that form. मैं तुम्हें लास्ट में उसकी वेबसाइट दे दूंगा. Go to that. अगर you are not falling in this category, go and look at that part also, just in case. Okay. So remember that तुम्हें डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड पूछा जाएगा. ओके. सो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको पता करना पड़ेंगे. तो तुमसे एसएससी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मांगेंगे. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज बीन सबमिटेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कमीशन फॉर द पर्पस, नो चेंज विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली एट एनी अदर एग्जामिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर बोल रहा हूं. I cannot overemphasize the fact that you must fill this form very, very accurately. So date of birth exact लिखना. Date of birth जब एक बार final हो जाएगा तो it will be never changed. So make sure 2 बार 10 बार चेक करो. शायद साथ वाले को बिठा लो, किसी को, यार एक बार देख ले कोई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ. I understand this is a big day in your life, और ऐसे टाइम पर आदमी गलती कर ही देता है, अंधकार छा जाता है. Don't do that, करियर हिल जाएगा. Educational qualifications is the next part. A candidate must hold a degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India
or other educational institution established by an act of parliament and declared to be deemed as university under section 3 of the UGC Act. Now, सबसे important that all these deemed universities etc. are already covered under this part. मैं फिर बोल रहा हूँ, please keep a tab on which are the ones जो तुम्हारी university है, which does it fall under central or state legislature or not. You have to be very careful because they are very very strict about it. अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है. Candidates who have appeared at a qualifying exam, the passing of which would have rendered them educationally qualified examination, but have not been informed of the result, as also the candidates who appear at such a will also be eligible for preliminary examination. याद रखने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को मुझे डाउट आता है कि सर हमारा फाइनल ईयर है, हमारा रिजल्ट आया नहीं है, हम प्रीलिम्स दे या ना दे. You are eligible to appear for this exam. Very important, as all those candidates who are qualified for taking this will be required to produce proof of passing this examination along with their DAF 1 for the mains examination, failing which such candidates will not be admitted to the mains examination. याद रखो, आज एग्जाम चल रही है, मैं इससे सिंपल नहीं बता सकता. आज एग्जाम चल रही है, ओके, तुम्हारे कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, ये फाइनल एग्जाम है, तुमने दे दिया, रिजल्ट अभी आया नहीं है, नथिंग टू वरी, गो एंड प्रिपेयर एंड गो एंड अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. लेकिन ये याद रखना कि जब DAF 1 भरने का टाइम आएगा तब तुम्हारे पास ये फाइनल एग्जाम का पास होने का प्रूफ होना चाहिए. अगर तुमने वो नहीं सप्लाई किया, द गेम विल बी ओवर, यू विल नॉट बी अलाउड. एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इज फॉर दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जो MBBS दे रहे हैं या MBBS का फाइनल प्रॉफ में या चल रहे हो और तुम्हारा इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ, तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू. Candidates who have passed the final prof or the final professional MBBS or any other equivalent professional examination leading to a medical degree or certificate but have not completed their internship by the time of submission of their applications for the CSE will be provisionally admitted to the civil service examination, provided they submit along with their application a copy of certificate from the concerned authority or the university that passed the requisite final proof of examination. तो यहाँ पर फाइनल प्रॉफ की बात हो रही है. अगर फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो भी यूनिवर्सिटी है वो एक सर्टिफिकेट ले, तुम फाइनल प्रॉफ पास हो गए, तुम्हारा इंटर्नशिप चल रहा है. But the point is continue. In such cases, the candidates will be required to produce at the time of their important word interview, personality test के समय तक तुम्हारे पास ओरिजिनल डिग्री और सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न कॉम्पिटेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी that they have completed all requirements including internship. तो अपना मैथमेटिक्स ठीक कर लो, तुम्हारा मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए. मैथमेटिक्स इन द टर्म्स ऑफ कैलेंडर क्या मतलब, तुम्हें पर्सनालिटी टेस्ट तक तुम्हारे पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज वेल एज तुम्हारी डिग्री पूरी होनी चाहिए. On the day of the interview, when you are there at that time, you have to have everything done with. So very important for MBBS, and that is why a special paragraph has been made to you. Second is attempts. Every candidate appearing at the exam is otherwise eligible shall be permitted 6 attempts at the civil service examination. However, relaxation in the number of attempts will be available to SC, ST, OBCs. So general category 6 attempts. Number of attempts for scheduled caste, scheduled tribes is unlimited. For OBCs is 9 and 9 for the rest of the category that is given. तो यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, तुम लोग चेक करते रह सकते हो. जनरल EWS is for economical weaker section, SC is for scheduled caste, ST is for scheduled tribes, OBC is for other backward classes, permanent with benchmark disability is PWBD. So बड़ा important यहाँ पर तुम देख लेना कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो. फॉर एवरीवन एल्स, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला पैराग्राफ एज वाले पैराग्राफ के बाद आया. So obviously you have to first satisfy the age, then the educational qualification, and then you go to this part. So everything has to be following a sequence. So you have to be over here. So this is completely to be read with the first 2 qualifications also. So when you are 21 to 32, for example, general candidate 21 to 32, you have 6 attempts with the required educational qualifications. Educational qualification में डिग्री कब चाहिए और internship completion कब चाहिए, this also I have clarified. तो अभी तक हमने सब कुछ कर लिया है. We have looked at age,
we looked at educational qualifications, and we have now looked at the number of attempts. As I told you, now you have to see कि आपको ये apply कैसे करना है. So candidates are required. The point here is, the idea here is, now you have to see how do you have to approach this exam. तो real stuff. Okay, अब ये हो गया formality. अब एक important बात होती है जो हर साल का एक रूमर उठता है, हर साल उठता है कि सर इस बार नाउ ऑप्शनल चले जाने वाला है, या ऑप्शनल का एक और सब्जेक्ट बन जाने वाला है, या मार्क्स कुछ होने वाला है. कुछ नहीं बदला इस बार. सो ये एक्चुअली कट कॉपी पेस्ट है और व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट. कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज. इन फैक्ट कुछ ज्यादा भी क्या बोलूं. The preliminary examination, and for those of you who are appearing for the first time, you should be focusing this more on this. और जिन लोगों ने कर दिया है, right, then you know this, but फिर भी most people are not very clear about it. तो दो कंपल्सरी पेपर्स होंगे, दो कंपल्सरी पेपर्स होंगे इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम. दो कंपल्सरी पेपर्स होंगे, देने दोनों है. दिमाग में डालो. यस, इसका रंग अलग अलग है, लेकिन ये दोनों कंपल्सरी है. Both the question papers will be objective type, जिसमें MCQs होंगे, और each will be of 2 hours duration. GS paper 2 जैसे preliminary examination, इसमें दो कंपल्सरी है, लेकिन जो सेकेंड वाला है, जो GS paper 2 होगा, that is a qualifying paper with minimum qualifying marks at 33%. क्वेश्चन पेपर दोनों हिंदी में होंगे और इंग्लिश में होंगे, और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है. इसका सिलेबस जब तुम पढ़ोगे तो नेक्स्ट पार्ट ए ऑफ सेक्शन 3 में दिया हुआ, लेकिन मैंने उसको उठा के यहाँ डाल दिया ताकि यू कैन इजीली रीड दिस. पेपर 1 में आएगा 200 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसको प्यार से प्रीलिम्स बोला जाता है. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और जिसके लिए हम जूझ रहे हैं, द करंट अफेयर्स. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट. फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, economic and social development, sustainable development, etc. General issues of environmental ecology, biological diversity, and general science and technology. ये तुम्हारा क्या हुआ? ये हुआ पेपर 1, that is the GS paper 1 of prelims. ये 200 marks का है पेपर. This is compulsory. Even this is compulsory. This is 200 marks. जैसे CSAT बोला जा रहा है. So here you will see comprehension, interpersonal skills, logical reasoning, decision making, problem solving, general mental ability, basic numeracy, etc. etc. याद रखना, ये फिर नोट करें, पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, लेकिन दुख की बात है, it is mandatory for the candidate to appear in both the papers. Examination of the purpose. Therefore, a candidate will be disqualified if he does not appear for either of them. तो qualifying word अलग है और attempting word अलग है. आपको attempt दोनों करने हैं. The qualification wala, the first one is giving you the marks, the second one is giving you qualification marks. Important part is, एक खुशी खबर होगी जब तुम प्रीलिम्स देकर आओगे, फिर एक दिन आएगा रिजल्ट, वेरी गुड, बहुत खुशी होगी. उस दिन एक कट ऑफ होगा, उस कट ऑफ को तुम क्रॉस करोगे तो तुम एलिजिबल होंगे टू गो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. Now, so preliminary examination is for the selection of students for appearing for the mains examination. You will be given a time period for during which you will be submitting your DAF forms and the related documents, and then come to mains. This is the real stuff. It is intended to assess. ये थोड़ी देर के लिए मेरे साथ indulge me for 30 seconds. मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पूरा फायदा उठाओ. Make sure that you watch this completely. मैं साथ साथ पढ़ूंगा, and I think पूरे देश ने इसको साथ साथ पढ़ना चाहिए because it's very important. The main examination is intended to assess the overall intellectual traits and the depths of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. मेरे ख्याल से इसे ना ऑल इंडिया रेडियो पे चलाना चाहिए. It is very important. Please understand, यहाँ लिखा main exam intent assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. ये you have to understand this. If you don't understand this, you will never be able to understand why is one examination a mains examination, the other one is a preliminary examination. Preliminary examination range hota hai, it's range bound. Jitna pad sakte ho pad lo. So you should actually know everything about some things, or rather, some things about everything. In case of preliminary examination, this is more of a horizontal examination. In case of mains examination, you have to go vertical. So it has to be, you have to know everything about certain things, and the intellectual depth आना चाहिए.
उसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज लेवल दिखना चला जाएगा, especially when you're appearing for optionals. The nature and the standards or in GS papers, that is paper 2 to paper 5, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The questions will be such as to test the candidate's general awareness of a variety of subjects, which will have relevance for a career in civil service. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, must give relevant, meaningful and succinct answers. तो यहाँ पर बहुत क्लैरिफाइंगली वो बोले, बिकॉज और ये इन्होंने खुद ही बोल दिया, बिकॉज ये जनरल स्टडीज के पेपर्स होने वाले, एज द नेम सजेस्ट इट इज जनरल इन नेचर. The scope of syllabus for optional papers, that is paper 6 and paper 7 for the examination, is broadly of the honors degree 1 level, that is 1 level higher than basic or bachelor's degree and 1 level lower than the master's degree. In case of engineering, medical science and law, the level corresponds to bachelor's degree. So when I am talking, यहाँ पे बोला जाता है कि bachelor's degree से थोड़ा सा ऊपर, master's degree से थोड़ा सा कम, in all of the subjects except the professional courses like medicine, engineering and law and so on so forth. लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो मैं ना आमतौर पे नोटिस किया, which most people don't understand, when UPSC is saying कि graduation level, gold standard graduation level, what do you mean? मतलब तुम सही मायने में अच्छे स्टूडेंट्स थे, ओके, ग्रेजुएट हो जाना और ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट कंट्रोल होना दो अलग अलग बात है. बहुत सारे लोगों को, और हमें तो मालूम ही है, अब क्या बताएं तुमको, है ना, तो तुम ही बताओ, हम बतलाएं क्या, कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में क्या क्या करके हम निकल जाते हैं. ग्रेजुएशन वो टाइप का, वो स्क्रेपिंग थ्रू ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही. रियल गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, और इन केस ऑफ मेडिसिन, लॉ एंड इंजीनियरिंग, एंड इन केस ऑफ ऑल अदर ग्रेजुएशन plus some shades towards masters is the entire idea of mains. So crucial step up तुम्हें समझना आना चाहिए that you have to understand the mains examination. The written examination will consist of the following papers. पहले लिखा हुआ है qualifying papers. Okay, this is very very important. Second category, papers to be counted for merit. तो दो categories पहले इसको divide कर लो. Your mains will be divided into two categories, one for qualification, one for merit. Qualification papers are paper A and paper B, जिसमें paper A will be one of the Indian languages that will be selected by the candidate included in the 8th schedule of the Constitution. ये तुम्हारा क्वेश्चन भी हो सकता है पॉलिटी में. So whichever the constitutionally recognized languages that as mentioned in the 8th schedule, उनमें से कोई एक language which is considered as an Indian language, और paper B will be that of English. अब यहाँ तक है केवल qualifying papers. Then you have papers counted for merit, जिसमें paper 1 will be essay type and then paper 2 will start with that GS1, GS2, 3, 4 and all the way till GS4. Or paper 6 and paper 7 are optional subjects 1 and optional subjects number 2. So if you notice on this, here this is paper A and B 1 and 2. So we call it paper A and B, 2 papers. This is qualifying. Then you have paper 1 which is essay, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. So यहाँ तक आ गए, मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, and then it will be followed by a personality test. So when you are doing this entire part, यहाँ से लेकर यहाँ तक will be called as a mains examination. So the real substance is the mains examination. मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा for the next 30 seconds. Okay, I will relatively not disturb you. एक सवाल है जो ज्यादातर लोगों को नहीं आंसर देने में मजा आता, कि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे सिर्फ 27 जून 2021 दिख रहा है. They are not noticing that preliminary examination is only a clearing examination. भैया उसके बाद मेंस भी पास करना है. That's a bigger deal. यहाँ पर रैंक आने वाला है. So start looking at that horizon. Oh, ये आएगा जब सितंबर की बात आएगी. So you have to keep focused on that part. Preliminary examination is only a step in that direction. So papers on Indian languages and English, paper A and paper B will be matriculation or equivalent standard, will be of, it's important, qualifying nature. They will not be counted for ranking. इससे ज्यादा boldly क्या लिखा जाएगा. So very important part, इस वाले पार्ट को खुद भी पढ़ लेना, क्योंकि कुछ एरियाज है जहां पर कुछ एग्जाम्स को एग्जेम्प्ट है. So you can always look into this part. I will leave it to your own discretion. The important part यहाँ पर जो है, that is an announcement, is paper A and paper B are qualifying in nature. फिर languages बहुत सारे लोग पूछते हैं कि for the language medium or literature languages, the scripts to be used by the candidates will be used as under. So all the languages primarily are handled. So Assamese script and so on and so forth. So these are the language medium and the literature for which you are allowed to. So इसमें body flexibility, you can use any of these languages of your choice.
marks obtained by the candidates for paper 1 to 7 only, मैं फिर से बोल रहा हूं, marks obtained by the candidates for the papers 1 to 7 only will be counted for merit ranking. ये क्या हो गया? Paper 1 to 7 will only be counted for merit. Okay, the first two, paper A and B, are qualifying in nature. So especially for those who are attempting for the first time, get that clarity. वो clarity आनी बड़ी जरूरी होती है. Paper 1, candidates essay लिखेंगे. Paper में candidates will be required to write essay on multiple topics. They will be expected to keep closely on the subject. ये सिर्फ जगह भरने का, पेज भरने की जगह नहीं होती. To arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely, credit will be given for effective and exact expression. तो ये मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा because बहुत सारे टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं. I will help you out in how to write an essay during the course of our plus classes. मैं तुम्हें help करूंगा to try and understand that part also. अब paper 2, on also called as GS1, that is, I hope you are learning Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. उसी तरह से paper 3, ये governance, constitution, political justice, international relation. Then you have science, technology, economic development, biodiversity, security, etc. Then you have ethics, integrity. This is GS4 and paper 5. तो यहां तक हो गया paper 5. Now remaining 2, that is paper 6 and paper 7, which is optional paper 1 and 2. और इसी के साथ मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं that 7th March को मैं अपना PSIR का ऑप्शनल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं. So for those of you जिनको ऑप्शनल चूज करना है PSIR, you're most welcome to join it. मैं उसकी अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में दे देता हूं. और जिनको बाकी चॉइसेस देखनी है, these are the various option subjects for means examination, agriculture, animal husbandry, anthropology, botany, chemistry, civil engineering. Take your call on this part. ये अपने आप में भी एक मेजर ही चॉइस होने वाली है कि तुम लाइफ में क्या डिसाइड करने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शनल. मैंने एक YouTube पर वीडियो बनाया हुआ है on how to choose your optional. You can certainly suggest. And those of you who are interested in this part, that is PSIR, this is serial number 20. Please join me on 7th March. 7th March को मैं start कर रहा हूँ. And this is a 10-part series. Plan यहाँ पर ये है क्योंकि ऑप्शनल में बहुत डिटेल में तुम्हें पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको 10 parts में डिवाइड किया है so that you understand this. And then comes the big day. The big day of the personality test. Candidates will be interviewed by a board who will have them before them the record of the candidate's career. The candidate will be asked questions on matters of general interest. Object is to assess the personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observers. It is intended to judge the mental caliber of the candidate. In broad terms, this is really an assessment not only of the intellectual abilities but also social traits and interests in current affairs. Some of the qualities are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, and so on and so forth. ये बिल्कुल strict cross examination की तरह नहीं होता, ऐसा at least on paper है. It is an absolute conversational basis, लेकिन इसके लिए तुम्हें prepare करना पड़ता है because आपको quick answer, pressure situation में answer और बड़ी framed and balanced arguments and based answer होना चाहिए. तो बड़े अच्छे इसमें आपको YouTube पर इंटरव्यूज सेशन सीख जाएंगे ऑफ द टॉपर्स एटसेट्रा. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेरिट. और एक दिन जब तुम ये अटेम्प्ट दे दोगे, फिर तुम्हारा एक दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में तुम पास हो जाओगे और फिर तुम चॉइसेस लोगे, फिर तुम्हारा कैडर होगा, फिर तुम मसूरी जाओगे. ब्यूटीफुल. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स. दिस इज द एंड ऑफ इट. अगर तुम्हें इस बारे में और पढ़ना है तो यू कैन लुक एट दिस link, that is tinyurl.com/UPSC news/Sidharth Arora. तो अगर तुम इस पर चले जाओगे तो you can always read this entire notification or you go straight away to the UPSC website and you can actually, मैं तो चाहूंगा कि तुम इसको पूरा डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो एंड वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं भी कोई भी गलती ना हो, कोई शक शुबा ना हो. And make sure that you make the most of these 115 days that are left. इस 115 days में दुनिया बदल जाने वाली है. Make sure that you give your best shot. और अगर हमारे से मदद चाहिए, so make sure that you become a part of Unacademy, which is the largest online learning platform. All तुम्हें याद रखना है is the code SIDLIVE, SIDLIVE. You get the best of the educators under one platform for all the subjects, whether you are taking plus classes,
whether you are taking iconic classes or अब एक बड़ा ही important part is the batch courses are launched already. Unacademy Combat is also in. ये Unacademy Combat तुम्हारे बड़े काम का हो जाएगा. 7th March को ये है. If you crack this, you are going to get huge awards. Make sure that you don't oppose this or don't waste this opportunity. अगर तुम मेरे साथ मेरे PSI कोर्स को लॉन्च करना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगा तुम एक कॉम्बिनेशन कोर्स लो which is plus as well as optional or iconic as well as optional. Important announcement, the course is live now. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन PSI और ऑप्शनल आज ही मौका है, इसको ज्वाइन कर लो. इसमें अब देर करने का कोई सवाल नहीं होता. देयर इज नो फायदा, नो एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट. So I hope everyone has understood this notification. The big day has arrived. 115 दिन रह गए. What do you do out of it? What do you make out of it is going to determine what your future is all about. So you're a wise gang of students, my friends. Make a wise decision and take it now. So in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.